Next, first we have to understand inheritance, then we have to go with the method overriding, right? So what is inheritance? What is inheritance? What do you mean by inheritance? Inheritance means we can use मेथड ऑफ पेरेंट क्लास के मेथड्स चाइल्ड क्लास में यूज That's only methods. मेथड्स फिर सब कुछ उसमें आता है So वेरिएबल्स a simple definition of inheritance is a class acquire the property of another class which is known as inheritance, right? A class acquire property of another class. अगर आपके पास एक क्लास है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं. प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज आ गई, राइट? इट कुड बी एक्सेस, वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, राइट? जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज रहती है, तीन ही प्रॉपर्टीज रहती है क्लास के पास. वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होती है और उसके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, राइट? सो यू कैन एक्सेस the variables, methods as well as the constructor. 1 minute guys. हाँ शुभम, લગભગ બપોરે રાખીશું વખત 3:30 વાગ્યાની આસપાસ, કારણ કે આજે હું થોડો સવારે મોર્નિંગમાં પેક છું એટલે. હા ને, હું મેસેજ કરવાનો તો એક કામ કરને, ગ્રુપમાં મેસેજ નાખી દે ને કે 3 o'clock રાખી દે ટાઈમિંગ. 3 o'clock વી કનેક્ટ, રાઈટ? હા ને, ઓકે. Okay, so we can access the property of another class like a variables, methods or constructor. It represent your parent and child scenario, right? So in this case, child will access the property of parent class, right? Child will access the property of parent class, right? To access the property, there is one keyword over there, right? You have to use that keyword for accessing the property. The keyword which we use for the inheritance is extends, right? You have to use extends keywords to access the property of another or parent class on a child. क्लियर? सो ये सारी चीजें हैं जो इनहेरिटेंस के लिए हमें चाहिए ही चाहिए. क्लियर गाइस? यस सर. Okay, I think you people are aware about the inheritance. You already learned this thing in a C++. There are certain types of the C++, right? But how many types of C++? Multi-level. Yes. First one hybrid. First one single, then single. Multi-level. Second one is multi-level. Third one is multiple. Yes, multiple. Fourth one is hybrid. Hierarchical. Hierarchical, hybrid and hierarchical. Hybrid and fifth one is hierarchical, right? So these all are the types of inheritance in your C++, right? ये सारे ही आपके टाइप्स है इनहेरिटेंस के जो आपने पढ़े थे इन योर C++. आपने ये सारे पढ़े हुए ही थे, राइट? सेम जावा के अंदर भी यू कैन अचीव द सेम थिंग, राइट? एक्सेप्ट 1 और 2 जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, राइट? अदरवाइज यू कैन अचीव ऑल अदर
types of the inheritance in your Java, right? So let me discuss one by one, right? मैं single से start करता हूँ, multi level पे जाते हैं, multiple पे जाते हैं, hybrid पे जाते हैं, hierarchical पे जाते हैं, right? So let me create one file. Okay. Okay, so let me discuss, let me define a single inheritance first, right? First, we declared a single inheritance, right? Single inheritance में काम कैसे होता है? There is only one parent over there, right? There is only one parent over there. यहाँ पे एक ही आपका रहता है parent, and there is only a single child is there, right? यहाँ पे है आपका child. You have to access the property of the parent from the child, right? So this is represent as an single inheritance, right? ये आपका है single inheritance है, right? So we are just achieving this concept with the help of practicals, right? Let me see, let me achieve. So I'll just declare class parent, all right, and I'm not defining anything inside this class right now, right? I'll just first I'll just created the structure, right? Then we are going to declare a variable as well as the methods or all the stuff, right? Then class child, right? Now I want to access this particular parent class on my child class, right? ये मुझे करना है, right? So compulsory I have to use a extends keywords, right, on a child, extends, right? And then you have to apply which class you want to inherit. So I'll just inherit the class as parent on a child, right? So you just pass extends parent. Clear यहाँ तक? Clear यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Now we just define variables inside our parent, like int of a equals to, I'll just define as 10. Now I just created one method inside the child, void display, right? And we try to access the value of a with child class, right? So system dot out dot println value of a from parent is, right? We'll just pass as a, right? Because here we are inheriting the parent, right? So we can access the all property of the parent through your child. So I just define one method display, and in that method I'm accessing the variable of a which is already available into the parent class, right? So we can do that with the help of extends, right? Extends are actually copy of your properties of the parent into your child. So that is why we can accessing the content of parent into your child class. Now if I want to access this display, I should create the object of the child first, right? I have to create the object of the child, then we can access the property of child, right? Now let me create the object first. So I'll just created an object child, c equals to new child, sorry, and we'll call the method that is display. Okay, so this is done, right? Let me run this code. Java C, okay, 1 minute. Java C inheritance dot java. Let me run this code. Inheritance dot java. Okay, we'll get the value, look, 10, which is a value which we declared inside a parent class, but that value are displayed in your child class, right? So this is representation of your single inheritance, and we are accessing the variable. Same way we are accessing the methods also, like if I'll define one method here, show, right, and I'll define system dot out dot println show method is called, right? I'll just pass on message here, right? As per the rule, if I want to access this method, I have to create the object of parent, and then I can access the method of
the parent class, but parent class is already inherited on a child. So with the help of child object, we can access the property of the parent. So I can access c dot show, right? Look, let me run this code. आ गया हमारा. So method is clear. Yes, sir. Okay, so we can access variables, we can access the methods, right, which is already declared in your parent class, that we can access with the help of child class, right? We can even access the constructor, but for constructor access we have to use a super keyword. So we'll discuss this later on, right? उसके लिए आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना है, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर को भी आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड से कैसे एक्सेस कर सकते हैं. Right, so we see that later on, don't worry. Next interface, no, next inheritance, that is a multi-level inheritance, right? Now multi-level inheritance represent with a multiple parents, right? Like I have one parent here, parent class, right? We have another class as a child, we have another child is a super child or grandchild, right? Now in multi-level, it works with the properties of the parent will access by your child class, the properties of the child will be accessed by your grandchild, right? So it's look like your grandfather, your father, and you, right? This is a such kind of tree, right? So your father will access the properties of your grandfather. You can access the properties of your father. You can even directly access the properties of your grandfather, because your father is inheriting the property of the grandfather, so you can directly access the property of the grandfather. So यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे पेरेंट जो है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड एक्सेस करता ही करता है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी ग्रैंड चाइल्ड एक्सेस करता है. बट अगर आप ग्रैंड चाइल्ड से पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करना चाहो तो भी वो वैलिड है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आप किसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हो, पेरेंट की, बट वो वाया किससे एक्सेस होगा, वो वाया एक्सेस होगा आपके चाइल्ड से ही वो एक्सेस होने वाला है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Right, let me create one program with the multi level. So I'll just create one more class here, super or grandchild, okay, extends child. Okay, now here we'll declare one method of test, and I'll use the math contained out. Right, we don't require this method also, right? We can directly access the property, but I'll just, for our knowledge, I'll just use that method, right? Otherwise you cannot, if you don't want to define this method, it's okay, you can directly call the properties of the child as well as the parent through the grandchild, right? Method of grandchild. Okay, now we have to create the object of grandchild. So I'll just change the name of grandchild. So with the help of C, we can access the display. So that is a child method. With the help of C, we can access the properties of the show, which is a method of the parent, right? And we even access the taste, right, which is its own method, right? We can even access that method also, right? Let me run this code. Let me hit. So compilation is done. Look, we are accessing three methods, right? So ultimately we are accessing the method which is inside your grandchild, we are accessing the method which is inside your child class, we are even accessing the method which is inside your parent class, right? आपके parent class के अंदर भी जो method था हमने क्या करा, उसको भी access किया through the grandchild object. So as I said, if you have created your grandchild object, you directly access the property of parent class because it's a multi-level.
so that properties are already inherited by your child, right? And that old property which is clubbed into the child of its own as well as your parent are directly accessible by your grandchild. Clear? So this is known as multi-level. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, next is multiple. अगर ये कंप्लीट हो जाए ना तो इसी आईडी पे वापस कनेक्ट हो जाना. मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? हाँ, एक पेरेंट क्लास होता है और एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं एक सूट. यस, सो यहाँ पे you have only one parent, right? It's a parent and you have a multiple child classes, right? So यहाँ पे एक child है, यहाँ पे एक दूसरा child available है, right? This is child 1, this is child 2, right? And that things are inherited, the properties of the parent will access while child 1 as well as your child 2, right? उन दोनों में से कोई भी उसकी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? यूज कर सकता है. क्लियर? तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? लेट वी रन हिट द कोड of multiple. So I'll just, this is right, class child1 extends child. I'll just change here, I'll just make it child1 and this is child 2 and we want to inherit the properties of parent. Right, now if I'll hit my content child 1 with the show, I'm not using this thing, right? क्या होगा? Error आएगा है ना? C is a small cell, not capital, so it throws an error. Now whatever, चल क्या आएगा आउटपुट? रन वहाँ होगा. पे आपने C1 कर दिया है. हाँ 1 मिनट में चेंज करता हूँ उसको. क्या आएगा यहाँ पे? शो वाला मेथड रन होगा और डिस्प्ले वाला. डिस्प्ले वाला एंड शो वाला, राइट? ओके, लेट मी रन. तो ये कहाँ से मल्टीपल हुआ, राइट? क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported by the Java language, right? और अगर ये रन हो रहा है तो इट्स नॉट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये नहीं है. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? आपने गलत स्ट्रक्चर मुझे बताया. मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? आपने जो मुझे बताया दैट इज अ टोटल रॉन्ग स्ट्रक्चर. मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? यू हैव मोर देन वन पेरेंट, right? And that parent is accessible by only single child, right? This is the structure of multiple inheritance, right? This is your parent 1, this is your parent 2, and parent 1 property, parent 2 property will be accessible by child class, right? This is multiple inheritance, right? आपने मुझे जो बताया वो multiple नहीं है, वो single inheritance ही है आपका. क्यों वो सिंगल है? क्योंकि वहां पे क्या होता था, आपके पास एक पेरेंट था
और मल्टीपल चाइल्ड्स थे, राइट। बट अगर आप इसको सेग्रीगेट करो, राइट, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, अगर आप इसको सेग्रीगेट करो, डिफाइन करो अलग से, तो हर बार ये एक यूनिक स्ट्रक्चर आपको देता था, पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन, then it's a parent child combination, then it's a parent child combination, right? So it's a single inheritance, it's not a multiple inheritance. Multiple inheritance means what? You have a 2 or more parent class, that classes are applicable on a single child class. This is known as multiple inheritance. Clear? इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, कि आपको याद आता है कि नहीं आता है पहले? क्लियर? तो आपने जो मुझे बताया वो सिंगल था, वो मल्टीपल नहीं था, राइट। अब हम मल्टीपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मल्टीपल अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी डिक्लेयर्ड हियर पेरेंट 2, पेरेंट 1, डिलीट, दिस इज योर चाइल्ड, एक्सटेंड्स। अब एक से ज्यादा क्लासेस कैसे इनहेरिट करोगे? अगर मुझे एक से ज्यादा क्लासेस सी लैंग्वेज में करने थे तो हम कैसे करते थे? सी लैंग्वेज में कैसे करते थे? मुझे पता है सी लैंग्वेज में हम ऐसे करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना था। सी लैंग्वेज में क्लास चाइल्ड, फिर हम करते थे कॉलन, क्योंकि वहां पे एक्सटेंड नहीं था, कॉलन था। फिर यहाँ पे हम करते थे पब्लिक, फिर वहां पे क्लास का नाम लिखते थे, जैसे यहाँ पे लिखा पेरेंट, और फिर मेरे पास दूसरा क्लास है तो मैं यहाँ पे लिखता था पेरेंट 1, right? So 2 classes are going to be inherit on a single class. In this statement is in your C language, C++ language. C language में तो आता ही नहीं है, right? C++ language के अंदर हम इस तरह से लिखते थे। जावा के अंदर हम कैसे लिखे? let we put this like parent 1, same as C structure, parent 2, right? let we check क्या आता है। it throws an error, राइट, इट थ्रोज एन एरर, राइट। किसकी एरर दे रहा है वो? आपने जो कॉलन किया हुआ है वो उसकी एरर उसको दे रहा है, राइट। क्या एक्सपेक्टेड है उसको? एक्सपेक्टेड है करली ब्रैकेट, राइट। सो हियर इट रिप्रेजेंट दैट यू कैन inherit only one class at a time, राइट। आप एट अ टाइम एक ही क्लास को क्या कर सकते हो? इनहेरिट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स व्हाई इट शोस, इट गिव्स एन एरर। 1 मिनट, क्या एरर? या वो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करवाया है, तो वो कॉल नहीं होगा ना, इनहेरिट ही नहीं है तो कहाँ से कॉल होगा? 1 मिनट, अगेन ए को कॉल कर रहा है। ओके, सो यू कांट इनहेरिट मोर देन 1 क्लासेस ऑन अ सिंगल क्लास। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इसीलिए जावा क्या सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी क्या क्रिएट होता है? यहाँ पे भी क्रिएशन होता है आपके एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम का, राइट। सपोज आप समझ लो कि मेरे पास सेम क्लास है, राइट, मेरे पास सेम क्लास है, पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, और दोनों क्लास के अंदर मेरे पास सेम मेथड है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शो मेथड, दोनों क्लास के पास मेरे पास शो मेथड अवेलेबल है। और अगर सपोज आप अज्यूम कर लो कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है वो तो हमें पता ही है, बट हम सिर्फ अज्यूमशन कर रहे हैं कि हाँ वो करता है, राइट। और मैं अब यहाँ से कॉल करवा रहा हूँ शो मेथड को, जो चाइल्ड से कॉल हो रही है। अब चाइल्ड शो मेथड जो है वो पेरेंट 1 के पास भी अवेलेबल है और पेरेंट 2 के पास भी अवेलेबल है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको कौन सी शो को कॉल करना है, पेरेंट 1 वाली को या पेरेंट 2 वाली को, राइट। इसीलिए जावा कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। दैट क्रिएट्स ambiguous problem, right? It's known as ambiguous problem. इसीलिए जावा कभी भी आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। C++ के अंदर भी मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव तो होता था, बट वो भी ambiguous प्रॉब्लम अचीव करता था, पता है आपको? वहां पे भी ambiguous का एरर आता था,
और टू अवॉइड दिस एम्बिगुअस एरर वहां पे हम यूज करते थे वर्चुअल कीवर्ड का। हम किसका यूज करते थे? वर्चुअल, राइट। वर्चुअल कीवर्ड से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। तो वो क्या करता था? वो फंक्शन को बाईपास कर देता था। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है ए, वहां से मेरे पास दो क्लास है, ये दिस इज माई बी क्लास, दिस इज माई सी क्लास, और यहाँ पे मेरे पास डी क्लास है, और मैं डी क्लास से ए क्लास की मेथड को एक्सेस करना चाहूँ, सो इट कुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज अगर ए से ए को पहुंचना है, ए के पास जाना है, तो आप यहाँ से बी के थ्रू भी जा सकते हो,